Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. So today we are going to continue with understanding history for grade 7th, chapter 4, the Ottoman and Safavid Empires. In the previous class we are done with the Ottomans and today we are going to study the Safavid Empire. The Safavid Empire of Iran 1501 to 1722. The Safavid Empire of Persia was the strongest rival of the Ottomans in the East. Ottoman Empire के सबसे बड़े rival, सबसे बड़े enemy Safavid Empire थे. It replaced the Persian Sassanid Empire, to whom the Prophet Muhammad, peace be upon him, had sent his emissaries. Emissaries mean messenger. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिफरेंट एम्परर्स के पास मैसेंजर्स भेजे थे अपने लेटर्स देकर ताकि उनको इस्लाम की दावत दी जाए. और इसी तरह एक मैसेंजर विद द लेटर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैसनिद एम्पायर के पास भी गया था. द सैसनिद रूलर्स स्पर्न द ऑफर ऑफ द प्रॉफिट, लेकिन उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑफ़र रिजेक्ट कर दी एंड रेडेड दी मुस्लिम टेरिटरीज, और मुस्लिम टेरिटरीज पे अटैक किया. हेंस एक्शन वॉज टेकन अगेंस्ट देम, इसलिए मुसलमानों ने भी उनके अगेंस्ट एक्शन लिया. Persia was conquered during Hazrat Umar's caliphate between 642 and 644. He directed and controlled the expedition from Medina, many thousands of miles away, thus ending the Sassanid Empire. Persia continued to remain a part of the Umayyad and Abbasid empires, but eventually when these empires weakened, the Safavid took control of Iran. So basically पर्शिया, जिसका मॉडर्न एरिया ईरान है, उधर ससानिद एम्पायर रूल करती थी. लेकिन ससानिद एम्पायर को हज़रत उमर के खिलाफत के टाइम पर कॉन्कर कर लिया गया. हज़रत उमर ने इसको फतह कर लिया. उसके बाद ये एरिया उमैयद और अब्बासिद के कंट्रोल में रहा उस वक्त तक जब तक ये एम्पायर्स कमज़ोर नहीं हो गई. जब उमैयद और अब्बासिद का रूल डिक्लाइन की तरफ था, उस वक्त सफ़ाविद ने इस एम्पायर को कंट्रोल किया. The Safavid Dynasty was founded in 1501 by Shah Ismail I of Azerbaijan. So Safavid Dynasty 1501 में शाह इस्माइल, जो कि आज़रबाईजान से आए थे, उन्होंने स्टार्ट की. The Safavid rule started just 25 years before the Mughals rules began in India. मुग़ल रूल जो इंडिया में शुरू हुआ था, उससे तकरीबन 25 साल पहले सफ़ाविद रूल ईरान में स्टार्ट हुआ. शाह इस्माइल was succeeded by his son Shah Tahmas I, who ruled for 52 years, the longest ruling Safavid monarch. शाह इस्माइल के बाद उनके बेटे शाह तहमस I, उनका रूल स्टार्ट हुआ जो तकरीबन 52 ईयर्स तक रहा, एंड इट वाज कंसिडर्ड द लॉन्गेस्ट रूलिंग सफ़ाविद मोनार्क किंग को कहते हैं. तो सबसे लंबा अरसा जो किसी सफ़ाविद किंग के पास था वो शाह तहमस I थे. ही कंसोलिडेटेड द एम्पायर, मेकिंग इट स्टेबल एंड पीसफुल. ही ऑफर्ड asylum to the Mughal king Humayun and helped him regain his throne. This resulted in strong ties between the Mughals and Safavids to the end of their region in the 18th century. So basically it was Shah Tahmas जिन्होंने एम्पायर को स्टेबल और पीसफुल बनाने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया. उन्होंने मुग़ल किंग हुमायूं को भी पनाह दी. मुग़ल किंग हुमायूं, उसके थोड़े से क्लैशेस स्टार्ट हो गए थे जिसकी वजह से शेरशाह सूरी ने इंडिया पे अटैक किया था और हुमायूं को इंडिया से बाहर निकलना पड़ा था, भागना पड़ा था. उस टाइम पे शाह तहमस ने हुमायूं को पनाह दी और उसको हेल्प किया टू रीगेन हिज थ्रोन, उसका रूल वापस लेने के लिए, जिसकी वजह से मुग़ल्स और सफ़ाविद के बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन गया जो कि 18th सेंचुरी उनका रूल ख़त्म होने तक रहा. Shah Tahmas is also credited with the revival of the fine arts, especially Persian miniature painting, bookbinding and calligraphy, which flourished to perfection under his patronage.
Safavid culture is also admired for the large-scale city planning, architecture and achievement made during the reign of the later Shahs. So basically a lot of work was done by Shah Temuz, particularly in the field of fine arts, जिसमें miniature painting सबसे important है, book binding and calligraphy, जो शाह तैमूर के टाइम पे बहुत ज़्यादा डेवलप कर गई, बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश कर गई. इसी तरह सफाविद कल्चर में सिटी प्लानिंग, आर्किटेक्चर और अचीवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा थीं, जो कि बाद में आने वाले शाह के टाइम पर भी रहीं. Shah Abbas 1587 to 1629 is known as the greatest Safavid ruler. He made a peace treaty with the Ottomans and reorganized his army by bringing in 2 Englishmen, the Shirley brothers, to train them, especially in the use of the gunpowder. He recovered areas lost by Tehmud's successors. Shah Abbas moved to the capital of Isfahan and built a new city alongside, which was famous for its architecture and grandeur. He also set up diplomatic ties with European countries. Shah Tehmud के successor Shah Abbas, इनके टाइम पर भी Safavid Empire बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था, and he is known as one of the greatest Safavid ruler. इन्होंने पीस ट्रीटी साइन की. पीस ट्रीटी अमन की ट्रीटी, अमन का एक एग्रीमेंट साइन किया विद द ऑटोमन्स एंड रीऑर्गेनाइज्ड हिज आर्मी. अपनी आर्मी पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी और दोबारा से उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की बाय ब्रिंगिंग इन 2 इंग्लिशमैन द शर्ली ब्रदर्स टू ट्रेन देम. और अपनी आर्मी की ट्रेनिंग के लिए 2 अंग्रेज़ों को बुलाया जिनके नाम शर्ली ब्रदर्स थे. किस चीज़ की ट्रेनिंग? द यूज़ ऑफ गन पाउडर. He recovered areas lost by Tehmud's successors. जो areas तहमस के successors ने, उसके बाद आने वाले kings ने खो दिए थे, वो सारे regain किए, recovered किए. Shah Abbas moved the capital to Isfahan and built a new city alongside. और ये टाइम पीरियड वो था जिसमें द एरिया इट वाज ईरान वाज फेमस फॉर इट्स आर्किटेक्चर, और इसके यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस थे, डिप्लोमेटिक टाइज थी. At their peak, the Safavid ruled one of the greatest empires covering all of Iran, Azerbaijan, Armenia, Iraq, Afghanistan, Caucasus, Georgia, part of Turkmenistan and Turkey, and with the capture of Kandahar extending to the western part of the subcontinent. बहुत सारे एरियाज़ सफाविद डायनेस्टी के अंडर रहे और सफाविद डायनेस्टी ने बहुत सी ग्रेट एम्पायर्स पे भी रूल किया. The Safavid are also known for making Shia Islam the religion of the state. So Safavid, they are the pioneers, they are the first one who made Shia the state religion, which was an important milestone in Muslim history. The Safavids became the first after the Sassanid to reaffirm the Persian identity and patronize its culture, literature, architecture, art and craft. Persia was revived as an economic stronghold through an efficient government. Persian language and its literature in prose and poetry has been appreciated by others, particularly the Mughals and other Muslims ruler of the region. Persian language में जो काम हुआ, like the prose कहते हैं simple नसर फॉर्म में जो काम होता है, like the stories and poetry, इसको बहुत appreciate किया गया दूसरे मुस्लिम रूलर्स ने, particularly जो मुगल्स थे. The Mughal emperors, especially Humayun, were impressed by the Persian civilization and also adopted Persian as their court language. मुगल्स के टाइम पीरियड में पर्शियन जो थी वो कोर्ट लैंग्वेज भी रही. Persian miniature painting was introduced in India and became a school of Mughal miniature painting. The Persian style of architecture and design was also adopted by Mughals. So मुगल्स के वैसे भी बहुत क्लोज रिलेशन थे, स्ट्रॉन्ग रिलेशंस थे, और मुगल्स ने इनके फॉर्म ऑफ आर्ट को, लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया. सिर्फ अप्रिशिएट नहीं किया बल्कि अडॉप्ट भी किया. Persian poetry. Classic Persian poetry is always rhymed. राइमिंग स्कीम होती है, प्रॉपर राइम होती है पर्शियन पोइट्री में. द मेन फॉर्म ऑफ दिस पोइट्री आर द कसीदा. कसीदा लॉन्ग पोइम है. मसनवी हैज़ राइमिंग कपलेट एंड इज़ यूज्ड फॉर रोमांटिक, हीरोइक और नैरेटिव वर्स. गज़ल
Ghazal is a shorter poem and has 4 or 16 couplets with the poet's pen name in the last couplet. तो गज़ल एक छोटी नज़म होती है जिसमें 4 से 16 शेर होते हैं और एंड में शायर का नाम होता है. एंड रुबाई, रुबाई a quatrain with a particular meter. रुबायात a collection of poets work is known as दीवान. जो पोइट ने अपना सारा का सारा काम एक जगह कंपाइल किया होता है उसे दीवान कहते हैं. The most popular Persian poetry is the classic poets such as Firdausi, Hafiz, Sadi, Umar Khayyam and Maulana Rumi. Hafiz Shahnama. Abu al-Qasim Firdausi 1942-1020 wrote the Shahnama. Shahnama, Shah means kings, Nama books, book of kings, also known as Shahnama in poetry, recounting the history of the Persian kings from the beginning of the time until the fall of the Safavid Dynasty in the mid-17th century, when Persia came under Muslim rule. After the Arab conquest, Persia came to be called Iran. The Shahnama comprises 60,000 verses and it took him about 33 years to complete. There are stories of the heroes of ancient Iran like Rustum and Sohrab. So, Firdausi's Shahnama. Shahnama, the book of the kings, and Firdausi is the name of the writer. जिस राइटर ने शाहनामा वाली बुक लिखी उसका नाम फिरदौसी था. इसमें किंग्स की बारे में मेन स्टोरीज थी. उसका ईरान के जितने किंग्स हैं उनकी हिस्ट्री का बताया गया. शाहनामा इट्स कंसिस्टेड ऑफ 6,000 वर्सेस. 6,000 वर्सेस थे इसमें और तकरीबन 33 इयर्स का टाइम पीरियड लगा इसको कंप्लीट करने में. इसमें ईरानियन हीरोज़ की भी स्टोरीज़ है लाइक रुस्तुम एंड सोहराब. A copy of Shahnama was made for the Safavid ruler Shah Tahmasp. And that book, it contained beautifully crafted miniature paintings and is said to be one of the best book in artistic expressions for its superb calligraphy, painting and illumination. शाहनामा की एक कॉपी सफ़ाविद एम्परर, सफ़ाविद रूलर शाह तहमस के लिए बनाई गई ख़ास तौर पे, जिसके अंदर बहुत खूबसूरत मिनिएचर पेंटिंग्स थी और इसको बेस्ट बुक कहा जाता है आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के हिसाब से, क्योंकि इसमें कैलीग्राफी, पेंटिंग और इल्यूमिनेशन बहुत खूबसूरती से किए गए. हफीज़. हफीज़ वॉज द पेन नेम ऑफ ख्वाजा शमसुद्दीन मोहम्मद शिराजी, a Persian poet popular with many in Iran and Afghanistan, who learned his poems by heart and often used them as proverbs and saying. Hafiz is known for his ghazals, which focused on the beloved or faith, and he specializes in exposing hypocrisy. He died in 1390 and his tomb is in Shiraz, Iran. Translation of his works are founded in all the major languages. Another important writer, poet of this time period was Hafiz. Hafiz का अपना नाम ख्वाजा शमसुद्दीन मोहम्मद शिराजी था और ये सिर्फ ईरान में ही नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे. इनकी मेन जो स्टोरीज़ होती थी दे आर अबाउट दी बिलवड और फेथ, और इन्होंने एक्सपोज किया हिपोक्रेसी को. ही डाइड इन 1390 और इनका जो टोम है वो ईरान में ही है. इनका काम बहुत सारी दूसरी लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया गया. सादी, another important poet of the time period 1184 to 1283. सादी was the pen name. एक्चुअल नाम नहीं था, पेन नेम जो शायर अपने असल नाम की जगह यूज़ करते हैं, तो सादी इट वॉज़ अ पेन नेम. इनका ओरिजिनल नाम था अबू मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला शिराजी, a poet as well as a widely traveled man who experienced many historical events. सादी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड थे क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया था और बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल इवेंट्स देखे थे. His best known works are Bostan, The Orchard and Gulistan, The Rose Garden. Bostan is entirely in verse and illustrates Islamic virtues such as justice, liberality, modesty, contentment. It also elaborates on darwish and other practices. सादी के जो इम्पोर्टेंट काम थे, अहम काम थे, उनमें सबसे अहम बोस्तान और गुलिस्तान था. बोस्तान में
बोस्तान मेनली जो है वो वर्ड्स फॉर्म में है, पोइट्री फॉर्म में है, और इसमें बहुत सारे इस्लामी वर्चूज़ की बात हुई हुई है, जैसे कि इंसाफ की, फ्रीडम की, कनात पसंदी और शाइस्तगी की। और इसमें दरवेश और उनकी प्रैक्टिसेस के बारे में भी एक्सप्लेन किया गया। द गुलिस्तान, द अदर बुक रोज़ गार्डन गुलिस्तान, मेनली इन प्रोज, ये प्रोज फॉर्म में है, नसर की फॉर्म में है। comprises personal anecdote, stories, opinion and advices for the reader। इसमें सादी ने अपनी पर्सनल स्टोरीज, ओपिनियन और एडवाइजेस, मशवरे दिए हैं रीडर्स को। एंड द पोइट्स रिफ्लेक्शन ऑन मोनार्क्स, मोनार्क्स बादशाहत, किंग्स के बारे में, एंड दरवेश। सादी रोड्स नम्रियस कसीदास ऑन ह्यूमन एग्जिस्टेंस, particularly one lamenting the fall of Baghdad to the Mongols। इन्होंने कसीदास लिखे हैं, बहुत सारे कसीदे, लॉन्ग पोएम्स। पर्टिकुलरली जो सबसे इनकी इम्पॉर्टेंट थी, दैट वाज अबाउट द फॉल ऑफ बगदाद, जब मंगल्स ने अटैक किया था बगदाद पे और अब्बासिड्स का रूल ख़त्म किया था। उसी तरह से मिर्ज़ा गालिब हैज़ रिटन सिमिलरली लेमेंटिंग द फॉल ऑफ दिल्ली टू द ब्रिटिश इन 1857। इन्हीं की तरह की एक पोइट्री मिर्ज़ा गालिब ने भी की अबाउट द फॉल ऑफ दिल्ली टू द ब्रिटिश, जब ब्रिटिश ने दिल्ली पर इंडिया पे कब्ज़ा किया 1857 में, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद। उमर ख़याम, अनदर वेरी फेमस पोइट, फेमस टुडे फॉर हिज रुबायात, अपनी रुबायात के लिए आज भी मशहूर है। उमर ख़याम was a Persian polymath। polymath का वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं। It's about a person who have command over several branches of knowledge, जिसे बहुत ज़्यादा कमांड होती है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी होती है about different branches, जैसे he was a mathematician, astronomer, philosopher and poet। In 1859, the English writer Edward Fitzgerald translated the Rubaiyats into English। इनकी रुबायात की ट्रांसलेशन इंग्लिश लैंग्वेज में की गई, विच बिकेम अ वाइडली अप्रिशिएटेड बुक ऑफ पोइट्री इन दी वेस्ट, जिसको वेस्ट में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया, बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और उसकी तारीफ़ की गई। ख़याम्स वर्क ऑन मैथमेटिक्स, especially algebra and geometry, and the study of astronomy led to the contribution of Jalali calendar, one of the oldest calendar in the world and the most accurate solar calendar in use today। So Umar Khayyam, he contributed in making the calendar and solar calendar which can still be used today, जो आज भी use किया जाता है। So now let's move towards the question answers। Look at the first question। When was Ottoman Empire founded and by whom? Who were the two most prominent Ottoman rulers? Ottoman Empire, it was founded in 1299 by Osman। The most prominent Ottoman rulers were Mehmed II and Suleiman the Magnificent। Why was the conquest of Constantinople so important to the Ottomans? The conquest of Constantinople, it was very important for the Ottomans because it allowed further conquest, further expenditure by the Ottomans in the Europe। Question number 3. In what ways did the Ottoman rulers make their empire progressive? The Ottoman Empire, it was very huge. The religious tolerance under the millet system of the Ottomans led to the acceptance of their government by the conquered communities. Its administration and army effectively controlled the vast empire based on janissary system and managed to keep it intact। Question number 4. Who were the janissaries? What role did they play in the administration of the Ottoman Empire? Janissaries, they were the army of the Ottoman Empire, mostly consisted of young non-Muslim boys। The Janissaries, they could rise in rank and become generals or gain higher position in the administration of the empire। Number 5. How did the Firman by Sultan Mehmed help the Ottoman Empire to survive for 600 years? The Firman by Sultan Mehmed, it helped the Ottoman Empire to survive for 600 years
because it gave non-Muslims the freedom to move freely within the empire, worship in their churches and monasteries, and practice their religion without any disturbance. Question number 6. Explain why Sultan Suleiman was called the Magnificent. Sultan Suleiman, he was called the Magnificent because of his conquest. He conquered a lot of areas and brought them under the Ottoman rule. Along with it, he was a lawgiver, he was a just king, and along with the Sharia law of the Ottoman Empire, he made a legal system which lasted for 300 years. The empire saw its height of cultural achievement in painting, carpets, pottery, and monument during this time period. Suleiman's rule was famous for the well-being of his empire. Question number 7. Explain the role of Firdausi's Shahnama in promoting Persian's ancient civilization and culture. Firdausi's Shahnama, it played an important role in promoting Persian's ancient civilization and culture. It's a book about the kings and it has the recounts of the history of the Persian kings from the beginning until the fall of the Safavid Dynasty. There are stories of the heroes of the ancient Iran like Rustam and Sohrab. Question number 8. Name the 2 famous and popular divans by Sadi. Explain what each one is about. The most famous divans by Sadi are Bostan and Gulistan. The Bostan is entirely in verse and illustrate Islamic virtues such as justice, liberality, modesty, contentment. It also elaborates on dervish and their practices. The Gulistan, it's mainly in prose and it comprised personal anecdotes, stories, opinion and advices for the readers and the poet's reflection on monarchs and dervish. Question number 9. How did the Safavid kings prevent the Ottomans from conquering their land? The Safavid kings, they made a peace treaty with the Ottomans in order to prevent the Ottomans from conquering their land. Question number 10. What is the connection between Persian civilization and the legacy of the Mughals in India? Persian language and its literature in prose and poetry, it was appreciated by all the other rulers, particularly the Mughals. Mughals not only appreciated it but also adopted their language and made it the court language. Persian miniature painting was introduced in India and it became a school of Mughal miniature painting. The Persian style of architecture and design was also adopted by the Mughals. Question number 8. Complete the following statement by selecting the correct answer. The Mughal defeated the Dash dynasty to bring Persia under their control. So it's basically the Muslims defeated the Safavid dynasty. B. It's B. Safavid Dynasty. Number 2. The Muslim conquest of Persia was undertaken by B. Arab armies directed by Hazrat Umar. After the Muslim conquest, Persia was known as Iran. It's A. Iran. Number 4. The Safavid came into conflict with Dash and Dash, Ottomans and Mughals. The Safavid king who helped the Mughal Emperor Humayun was Shah Tahmasp. It's B. Shah Tahmasp. Number 5. The Ottoman ruler famous for religious tolerance was Mehmed II. It's B. Mehmed II. Okay, students, so our chapter ends here. We'll stop here. Inshallah, we'll be moving forward with the next chapter in the next class. Give it a recap. जहाँ कोई मुश्किल हो, कोई चीज़ समझ में ना आए, you can ask in the comment box. Have a nice day. Till take care. Allah Hafiz.